A very good morning to all of you students. Myself, Srimati MRUNALINEE PATNAIK, Assistant Professor of Physics, RAMADEVI Women's Higher Secondary School, Bhubaneswar. Today, I will start the Semiconductor Electronics, which is part 2. We have already read that the energy bands in solids. The valence band, that means the range of energy is possessed by the valence electron, is known as valence band, and the range of energy possessed by the conduction electrons known as conduction band, and there is a gap between the valence band and the conduction band, and that is called as forbidden energy band gap. And we have classified the solid into three categories. One is our insulator, and second one is our metal or conductor, and third one is our semiconductor. We have already discussed that in a metal, the valence band and conduction band overlaps with each other, or there is three electrons are available in the conduction band. That's why it is a good conductor. And already we have discussed that in a semiconductor there is a less forbidden energy band gap, which is of amount 0.7 to 1.1 electron volt. But here the conduction band is completely empty. That means no electrons are available, no free electrons are available across the conduction band. So the valence band is completely filled. But as we increase the temperature of this substance, this semiconductor substance, so some of the electrons will jump from the valence band to the conduction band. So there is availability of free electron across the conduction band. So it increases the conductivity of the material. And similarly, we have the insulators in which there are a big gap between the valence band and the conduction band. So it is up to the order of 15 electron volt. So by applying so many of energy, that means thermal energy, no electrons are available across the conduction band. That's why it is a perfect insulator. But we have to discuss here the semiconductor. The semiconductor means we have already discussed the valence band. The range of energy is possessed by the valence electron in a solid is called as the valence band. It is for your note. And conduction band, the range of energy is possessed by the conduction band electrons in a solid is called as the conduction band. Then forbidden energy band gap, the separation between the conduction band and the valence band on the energy level diagram is known as the forbidden energy band gap. Simply it is called as band gap. And then classification of solids, we have insulator. These are the substances which do not allow the passage of electric current through them. And in terms of energy band, the valence band is full, and while the conduction band is empty. We have already discussed. Then further, the energy gap between the valence band and the conduction band is very high, and it is the of order of 15 electron volt. So therefore the electrical conductivity of these materials is extremely small. That is, at ordinary temperature, ordinary condition, it may be regarded as nil. So it is a so we have this type of energy band diagram. That means here the valence band and the conduction band, and the forbidden energy band gap is of order of 15 electron volt. Then we have conductors. Conductors, these are the substances which easily allow the passage of electric current through them, and that's why they are called as metals. And it is because there are large number of free electrons available in the conduction band. And in terms of energy band, the valence band is completely filled and the conduction band is partially filled. We have already discussed. And in terms of energy band, the valence band and conduction band overlaps with each other. So due to this overlapping, a slight potential difference across the conductor causes the free electrons to constitute the electric current. Therefore, electrical conductivity of these materials is extremely high. So in the band diagram, we have the valence band which is completely filled,
and conduction band may be filled or may be half filled, may be partially filled or may be empty. But as it overlaps with each other, so here free electrons are available across the conduction band. So we have then the semiconductors. Semiconductors, which are the substance whose electrical conductivity lies in between the conductor and that of the insulator. In terms of the energy band, the valence band is completely filled while the conduction band is completely empty. And then further, the energy gap between the valence band and the conduction band is very small, and therefore comparatively a smaller electric field is required to push the electron from the valence band to the conduction band. So there is an availability of free electrons across the conduction band. So in summary, we have a semiconductor which has almost full valence band and almost empty conduction band. So the small energy gap 0.7 to 1.1 electron volt between the valence band and the conduction band. So we can here write 0.7 to 1.1 electron volt. And then we have at low temperature, the valence band is completely full and the conduction band is completely empty, and therefore a semiconductor virtually behaves as an insulator at low temperature. As the temperature increases, the more valence electrons cross over to the conduction band and the conductivity increases. And here this shows the electrical conductivity of a semiconductor increases with the rise of temperature. That means the semiconductor has negative temperature coefficient of resistance. We have already discussed in the previous class that a conductor which has positive temperature coefficient of resistance, that means as we increase the temperature of these metals or conductors, gradually the molecular alignment is different and we have a conductivity gradually decreases, increasing the resistivity of the material of the conductor. But here the semiconductor has the negative temperature coefficient of resistance. That means as we increase the temperature of the semiconductor substance, then gradually the electrical conductivity increases, decreasing its resistivity. That's why it is used as the semiconductor devices. And then we have a semiconductor whose resistivity lies in between the conductor and the insulator, and we have the semiconductor substance which are germanium and silicon, that means tetravalent element, and here the resistivity is of order of 10 to the power minus 4 to 0.5 ohm meter. The most commonly used semiconductor substances are germanium and silicon. We know according to periodic table, the silicon which has atomic number 14 and the germanium which has atomic number 32. Then we have the both germanium and silicon are the tetravalent and their atoms are, that means outermost orbit we have 4 valence electrons and we have the structure is like this. So suppose we have a germanium atom, then at the outermost orbit we have 4 electrons and they form covalent bonds with each other. And then we have, suppose here silicon which has silicon, here the atomic number which is equal to our 14 say, that means we have 2, 8 and 4 electrons, 2 at the nucleus and then 8 then 4, and here we have in the germanium we have the atomic number which is equal to 32, that means it has 2, 8, 18 and outermost orbit is 4 and they forms the covalent bonds with each other. Then we have the structure is like this. Then here the conduction band, the forbidden energy band gap is equal to 1.1 electron volt for silicon, and then the conduction band, valence band, the gap between forbidden energy band gap is equal to 0.7 electron volt for germanium crystal. Then we have, what are the properties? So semiconductor, as a gist we can write it as the semiconductor have the following important properties, that means they possess crystalline structure. We have already discussed that crystalline and amorphous
amorphous structures, and the atoms are bound to each other by the covalent bonds, and their electrical resistance falls as the temperature rises, unlike metallic conductor. And then when suitable amount of impurity is added to the pure semiconductor, its conductivity rises appreciably. The process of adding impurity to the semiconductor substance is known as doping. So we have to start, what is semiconductor? So semiconductor, it is divided into two categories. One is intrinsic, another is extrinsic. But we have here the, suppose we have here intrinsic and then extrinsic. This extrinsic type of semiconductor is also called as impurity type of semiconductor. Impurity type of semiconductor. That means intrinsic type of semiconductor means the semiconductor which is in pure form is known as intrinsic. The semiconductor which is in pure form is known as intrinsic type of semiconductor. And what is extrinsic? That means the semiconductor which is in impure form known as impurity type of semiconductor. Impurity type of semiconductor. What is impurity? Impurity means, suppose आमे देखिथिबा गोटे पियोर सुना 24 कैरेट गोल्ड जदि आमे नबा तादेर ऑर्नामेंट्स आमे करिबा तो आमे देखिबा सेई जो ऑर्नामेंट्स पिंधिबा आमे सेइटा तार शेप सब बेले आमे टिके हाथ बाजी गेले सेटा चेपा हे जो मैलिएबल डक्टाइल तार जो कैरेक्टरिस्टिक तो पूरा चेपा जो किंतु व्हेनेवर आमे किछि अलॉय तादेर ऐड कर देबा ताहले आमे ताको ऑर्नामेंट्स करिकि पिंधि परिबा ता माने तार जो स्टेबिलिटी टा इंक्रीज कर जाए. सिमिलरली ये जो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस अच्छी जदि आमे पर्पस होची एथरे आमे कंडक्टिविटी बढ़ेबा तो कंडक्टिविटी बढ़ेबा को हेले वी हैव टू ऐड सम इंप्युरिटीज टू द सेमीकंडक्टर सब्सटेंस. सेमीकंडक्टर माने टेट्रावैलेंट. सो सेथरे आमे कोन ऐड करिबा ना आइदर आमे ट्राइवैलेंट इंप्युरिटीज ऐड करिबा नहले आमे पेंटावैलेंट इंप्युरिटी. माने ट्राइवैलेंट मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 3टा इलेक्ट्रॉन थिबो आउ पेंटावैलेंट मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे 5टा इलेक्ट्रॉन थिबो. सेमती टाइप रो जदि आमे सब्सटेंस ऐड करिबा ताहले आमे ताको कहिबा एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. ता माने से जो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurities to the semiconductor substance is known as doping. Doping what asiche amara seitu. Doping means the addition of doping, the process of addition, the process of addition of trivalent or pentavalent impurities to the semiconductor substance is known as doping. तो आमे एठी देखिबा कोन ना सपोज
सपोज आम नेले आमर रखीचे आम ये मनकर जर्मानियम एमती टाइप रो स्ट्रक्चर मनकर रहा दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ ईच अदर आम ये जमा मन रखा चेष्टा करवानी जर्मानियम जो आमर एनर्जी बैंड गैपटा आम सब जानूचे यहाँ हूँ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आउ सिलिकॉन आमर हूँ के 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बर्तमान ये जो सेमीकंडक्टर सब्सटेंस टाको मुझे मनकर यहाँ को गोटे से सब्सटेंस टाको मनकर गोटे मेटल लगे कि मुझे बैटेरी रे कनेक्शन कर दी जमती ये बैटेरी मु कनेक्शन करी सांगे सांगे मोर ये कौन हम ना इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक या भितर जो इलेक्ट्रॉन्स जी फ्री हेबे फ्री कि को इलेक्ट्रॉन हेबे ना जो इलेक्ट्रॉनटा वैलेंस बैंड रु कंडक्शन बैंड को जंप मारथिबो से इलेक्ट्रॉनटा फ्री है कि फ्री इलेक्ट्रॉन हेथिबो आ सी मूव करिवो सब बेले पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी को। तो आम ये देखा मनकर सपोज दीटा वैलेंस बैंड ब्रेक कला ताले इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन हमरो एई डायरेक्शन रे रहिला जेमती इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन हमरो एई डायरेक्शन रे रहिला एमती टाइप रो मूव कला सांगे सामे देखिबा कोन ना जदी बैंड थ्योरी अनुसार देखिबा एटा होची सपोज हमरो वैलेंस बैंड जोटा हमें कहूचे कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स आउ एठी हमें कहिचे मनकर सपोज एटा हमरो कंडक्शन बैंड जोटा हमरो कंप्लीटली एम्प्टी अछि एटा एम्प्टी अछि वर्तमान आमे देखुचे कोन whenever we apply external energy गोटे इलेक्ट्रॉन एठू कौन करछि जंप मारिछि ए जगह को क्रिएटिंग ए होल हियर तामने इलेक्ट्रॉन आठी एठी पहुंचला बेला को होल आसिकी एठी पहुंचला तामने होल टा गोटे क्रिएट हला तामने वर्तमान ए जो पाखरे जो नेक्स्ट वैलेंस बैंड रे जो इलेक्ट्रॉन थिबो से चाहिबो कोन एई स्पेस टा को ऑक्युपाई करिवा पई ऑक्युपाई कले पुनी एठी कोन हबो एठी गोटे होल क्रिएट हबो आउ एईटा इलेक्ट्रॉन रे कंप्लीटली फिल्ड हे जो तो आमे देखिबा कोन ना इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन रे मूव करूची तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे हमर होल टा कोन होतो मूव करथबो आउ एईटा को आमे ना देइचे कोन होल करंट बोली ना देइचे और कन्वेंशनल करंट बोली हमें को एठी कहिचे एटा प्रीवियस क्लास रे मध्ये मु टिके कहितली किंतु एठी जो इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रे आमे देखुचे कोन ना एठी बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी होची किंतु वर्तमान आमे तार कंडक्टिविटी बढ़ेइबा को जिबा केमती बढ़ेइबा से कंडक्टिविटी को ता माने आमे एठी वर्तमान ऐड करिबा गोटे पेंटावैलेंट एलिमेंट तो पेंटावैलेंट एलिमेंट हमरो होची कोन ना हमरो आर्सेनिक आउ एंटीमनी आर्सेनिक रो आमे मने रखिया को हेले जस्ट एठी केमिति मने रखिबा ना आर्सेनिक रो हमरो एटॉमिक नंबर होची जर्मानियम रो होची 32 33 तो आर्सेनिक रो एटा होची हमरो 33 आउ तमने एठी होबो केते 2 8 18 आउ 5 हेला आउ एठी 33 प्लस 18 तमने एटा होबो हमरो 51 तमने एठी हेला केते ना 2 8 18 18 आउ 5 हमें देखिले so whenever we add pentavalent impurities such as arsenic or antimony to the semiconductor substance तार जो चारिटा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे जर्मानियम रो सब्सटेंस सहित कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करि जिवो तो आउ गोटे मात्र बाकी रहि जिवो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन ता हमर बाकी रहिला से अवेलेबल हबो कोठी हमर कंडक्शन बैंड रे तो एठी हमें मन कर सपोज एठी रखिले मन कर हमें ऐड कले एटा होची हमर आर्सेनिक ऐड कले एठी आर्सेनिक रे हमें देखिले जे तार चारिटा इलेक्ट्रॉन एठी हमर बॉन्ड फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कले आ गोटे इलेक्ट्रॉन हमर फ्री हे कि रहिला जोटा हमर अवेलेबल हला कोठी हमर कंडक्शन बैंड रे अवेलेबल हला ए माने समस्त वैलेंस बैंड भीतर रहिला वर्तमान आमे एठी देखिबा कोन ना जदि मु ताको बैंड थ्योरी अनुसार देखिबी ताले एठी मोर रहिला एटा होची मोर वैलेंस बैंड जोटा मोर कंप्लीटली फिल्ड हे कि रहिची आउ एटा होची मनकर मोर
कंडक्शन बैंड एठी मु देखुची कोन ना गोटे मु जेतिकी नंबर ऑफ माने करा 10 टू दी 3 into 10 to the power 6 जर्मानियम एटम सहित मु माने करा तीनटा एठी आर्सेनिक ऐड करिछि आर्सेनिक सब्सटेंस तीनटा मॉलिक्यूल ऐड करिछि ताले मु एठी देखिबी कोन तीनटा इलेक्ट्रॉन मोर कंडक्शन बैंड रे अवेलेबल ताले मु एठी तीनटा फ्री इलेक्ट्रॉन मोर रहिले कोठी कंडक्शन बैंड रे अवेलेबल हेले माने एटा को टेम्परेचर रे एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रे वर्तमान मु एई जो सब्सटेंस टाको वर्तमान मु कोन करिवि ना गोटे पावर सप्लाई टे मने करा देली जेमती मु पावर सप्लाई टे देबी संगे संगे मु एठी देखिबि कोन ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर अधिका हबो एठी जेतबेले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें देखुतिले एठी जेतिकी नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड रे इलेक्ट्रॉन थिले सेतिकी नंबर ऑफ होल्स हमर वैलेंस बैंड रे अवेलेबल होतिले किंतु वर्तमान एठी आमे देखिबा कोन ना एठी माने कर सपोज मु जेतबेले बैटरी रे कनेक्शन देबी तो एठू माने कर मोर दीटा इलेक्ट्रॉन किबा तीनटा इलेक्ट्रॉन मोर जंप मारले कोठी की कंडक्शन बैंड को तो एठी मु देखिबी 6टा इलेक्ट्रॉन हिथिबो एठी 6टा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हेतिबो आ एठी अवेलेबल हेतिबो तीनटा होल ता माने एठी एई जगह रे जो कंडक्टिविटी होउची ड्यू टू हमर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल अक्रॉस द कंडक्शन बैंड तो एठी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ फ्री होल्स अवेलेबल इन द वैलेंस बैंड एठी होतला कोन ना जोटा हमें इंट्रिंसिक टाइप रे देखुतिले एठी हमें देखुतिले नंबर ऑफ माने कर हमें रखुतिले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स हमें देखुतिले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स जेतेबेले इंट्रिंसिक केस रे किंतु बर्तन एक्सट्रिंसिक केस रे हमें देखिले कोन ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स available across the conduction band is more than number of holes available across the valence band. So, ethi conductivity is due to free electrons available in the conduction band. That's why it is called as electron type of conductivity. As electron is negatively charged, also it is called as N type of conductivity, and that semiconductor is also called as N type of semiconductor. So extrinsic semiconductor, now it is called as N type of semiconductor, and the conductivity is known as N type of conductivity and or electron type of conductivity, and the semiconductor is known as N type of semiconductor. So next suppose आमे रखिले तामाने extrinsic type of semiconductor divided into one is our N type of semiconductor, then another one which is also called as P type of semiconductor. So P type आमे केमती देखिबा वर्तमान आमे कौन करिवा से जो रखीचे आमे जो जर्मानियम क्रिस्टल रखीचे एटा जर्मानियम मनकर रखिले पुणी आमे एठी देखिले मनकर एमती कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करछदी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे चारटा इलेक्ट्रॉन अछि तो वर्तमान आमे एठी कौन करिवा ना किछि ट्राइवैलेंट इंप्युरिटीज ऐड करिवा सो व्हाट आर द ट्राइवैलेंट इंप्युरिटीज वी हैव टू ऐड हियर सो ट्राइवैलेंट इंप्युरिटीज first one is gallium and second one is indium तो इथे हमें मने रखिया पई हमें केमती करिवा ना गैलियम हमें कहूचे ट्राइवैलेंट दैट मींस गोटे नंबर 32 रु कमी थिबो तो एटा होची हमरो 31 मु एटा मने रखिया पई त मु कहूची देन 31 plus 18 that means it is equal to 49 so जेतेबेले मैं एठी गैलियम ता एठी रखिली गैलियम रखिली तो ये वर्तमान आमे देखिबा कोन एटा होची हमरो गैलियम रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे हमरो तीनटा इलेक्ट्रॉन रहिले जेमती तीनटा इलेक्ट्रॉन रहिले तीन जण हमरो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कले विथ अदर जर्मानियम एटम आउ गोटी शून्य स्थान हेकी पड़िला से शून्य स्थान को आमे कोन करिबा ना होल बोली देखेबा ताले होल ता हमरो अवेलेबल कोठी हबो ना ये होल ता हमरो अवेलेबल हबो वैलेंस बैंड रे किंतु कंडक्शन बैंड ता कंप्लीटली फ्री
कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फ्री थिबो आउ एठी बैलेंस बैंड रे हमरो होल्स अवेलेबल हेकी थिबो तामाने मने करो मु एठी बैंड थ्योरी अनुसार ताकू देखैबी ताले बैंड थ्योरी अनुसार मु एठी फर्स्ट देखुची कोन ना ए बैलेंस बैंड रे मोर एठी होल्स किछि अवेलेबल थिबे तामाने मने करो मु एठी ऐड करिछि 3 * 10 टू द पावर 8 जर्मानियम एटम मु नेछि आउ तीनिटा गैलियम एटम मने करो मु ऐड करिछि ताले मोर एठी मु बैलेंस बैंड रे देखिबी मोर तीनिटा फ्री होल्स थिबे किंतु एठी कोन हिथिबो ए कंडक्शन बैंड टा कंप्लीटली एम्प्टी हेकी थिबो एटा पूरा एम्प्टी अछि बर्तमान एई सब्सटेंस को हमें एठी कोन करबा किछि पावर सप्लाई करबा किछि एनर्जी हमें दबा थर्मल एनर्जी हो किबा हमर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो हमें जेंति दबा संगे संगे कोन हो ना एठू इलेक्ट्रॉन टा जंप मारिबो कोठी हमर कंडक्शन बैंड है तो एठी होल हमर क्रिएशन हबो तो एठी मन कर तीनिटा हमर इलेक्ट्रॉन हमर कंडक्शन बैंड को गला ताहले हमें तीनिटा फ्री इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड को देखिले वर्तमान हमें होल्स देखुचे कोन हमें 6 टा होल्स देखुचे बैलेंस बैंड ताहले एई जो टाइप रो कंडक्टिविटी एई कंडक्टिविटी को हमें ना देले कोन ना जेहेतु मूवमेंट ऑफ होल्स हमर रहिला अक्रॉस दी बैलेंस बैंड मोर रहिला तो एटा को हमें कहिए होल टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और एच टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और एटा को हमें जेहेतु होल रहउची पॉजिटिव चार्ज तो हमें कहबा पी टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोली आपको नाम तो एठी हमें देखुचे कोन ना मेजॉरिटी हमर एठी रहउची होल और माइनॉरिटी हमर हेकी रहउची हमर इलेक्ट्रॉन्स हमर रहउची तो एठी हमें नंबर ऑफ होल्स कोठी रहले ना नंबर ऑफ होल्स हमरा बैलेंस बैंड रहले से कोन हेतिबो ना एटा नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द हमरा कोठी ना हमरा कंडक्शन बैंड रे हमरा अधिक आइकी रहले सेही पे कंडक्टिविटी को हमें कहूचे p टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और h टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और पॉजिटिव टाइप ऑफ कंडक्टिविटी और होल टाइप ऑफ कंडक्टिविटी or it is also called as S type of semiconductor or P type of semiconductor. Generally हमें आपको P type of semiconductor बोली कहूचे माने positive type of semiconductor बोली कहूचे तो एठी हमें देखुचे कोन ना majority charge carriers are holes which are present across the valence band and minority charge carriers are electrons which are present in the conduction band किंतु हमें एठी A type में कोन देखुचे the majority charge carriers are electrons which are available across the conduction band and minority charge carriers are holes which are available in the valence band. तो सेठी हमें देखुथिले जे number of electrons across the conduction band is more than the number of holes across the valence band. किंतु आधे होल हमें देखुचे कोन एमाने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमें जदि हठात समस्त गोटे डाउट हो कोन हठात समस्त गोटे डाउट हो जे आमे रखीचे कोन ना हमरो जेहेतु हमरो इलेक्ट्रॉन्स रो अमाउंट ता अधिका अछि तो एटा बोधि नेगेटिवली चार्ज बोली आमे ताको भाबुथिबा किंतु ये नेगेटिवली चार्ज नुहे आमे एटा जानुचे आउ एटा आमे जेतरो होल सोल गोटे एटम के ऐड करजे सेति पे एटा को आमे कहूचे पॉजिटिवली चार्ज नुहे कि नेगेटिवली चार्ज नुहे बोली आमे कहूचे एटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोली आमे ताको ना दे देजे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो एन टाइप सेमीकंडक्टर पापा हो नहीं तामाने हमें देखिले कोन ना एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रे हमें देखुचे गोटे हला हमरो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो थरे हमरो रहिला एन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी हमें आपको ना देले एन टाइप और इलेक्ट्रॉन टाइप कंडक्टिविटी बोली ताको ना देले आउ सेमीकंडक्टर रो एठी हमें देखुचे कोन ना इलेक्ट्रॉन टाइप और नेगेटिव टाइप भी ताको कहा जाए नेगेटिव टाइप ऑफ कंडक्टिविटी बोली हमें ताको ना देले
तापर आमे एठी कहिले कोन ना एठी आमे देखिले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोठी अछंदी ना कंडक्शन बैंड रे is more than number of free holes भी हमें ताको कहि परिबा holes कहले चलिबो नाले free holes ये कोठी थिबे ना एठी valence band रे हमर थिबे similarly हमें त देखुचे p type of semiconductor रे हमें कोन देखुचे ना इटा होची हमरा positive type of conductivity or whole type of conductivity positive type or whole type of conductivity एठी हमें देखुचे कोन ना number of holes कोठी थिबो एटा ना एटा थिबो वैलेंस बैंड रे ये अधिका है कि थिबो काहाठो ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोठी थिबे ना एटा हमरो कंडक्शन बैंड रे थिबे तो किंतु एज ए होल ए एन टाइप और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ए माने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अच्छा बर्तमान आमे देखिबा ए जो एन टाइप और पी टाइप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक माने इंट्रिंसिक रे आमे देखुतले कोन ना जेतिकी नंबर ऑफ होल्स हमर रहिला हमर वैलेंस बैंड रे सेतिकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमर कंडक्शन बैंड रे हमर रहिला किंतु वर्तमान हमें देखुचे एक्सट्रिंसिक रे गोटे होचे हमर एन टाइप ता माने एन टाइप रे हमें देखुचे एटा होचे हमर वैलेंस बैंड एटा कंडक्शन बैंड तो ये कंडक्शन बैंड रे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द नंबर ऑफ फ्री होल्स अवेलेबल इन द वैलेंस बैंड P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रे हमें कोन देखुचे ना एटा हमर हला माने कर सपोज वैलेंस बैंड आ एठी हला हमर कंडक्शन बैंड ताले नंबर ऑफ फ्री होल्स अवेलेबल अक्रॉस द वैलेंस बैंड इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल अक्रॉस द कंडक्शन बैंड सेहिति पे आकु हमें कहिले जे जो कंडक्टिविटी होची P टाइप ऑफ कंडक्टिविटी आउ आरटा को हमें कहिले N टाइप ऑफ कंडक्टिविटी बोली हमें ताको ना देले तो बर्तमान आमे टिके सेटा को जेति की नोट्स करी जे टिके देखि दबा एटा ऑलरेडी मु कहि ची effect of temperature on the semiconductors at absolute zero temperature the electrons are tightly held by the semiconductor atoms and the inner orbit of electrons are bound whereas the valence electrons are engaged in covalent bonding. At this temperature, the covalent bonds are very strong and there are no free electrons available across the conduction band. Therefore, the semiconductor crystal behaves as a perfect insulator due to non-availability of free electrons. Then we have suppose it would a pure germanium crystal ame rakhile eta jodi mu energy band diagram te rakhibi tale ethi mu dekhuchi kono ना इटा माने का सेकंड थर्ड बैंड इटा न्यूक्लियस हमर रहला इटा सेकंड थर्ड इटा वैलेंस बैंड इटा कंडक्शन बैंड तो एठी जत्ते बडे आमे देखु जे एठी जदी मने कर गोटे रखिबा आमे एठी मने कर जो देखिबा एटू इलेक्ट्रॉन ता एठी जंप मारिची तले एठी इलेक्ट्रॉन रहले एठी कोन हो होल्स जोटा म तमो कहली जस्ट एटा खाली टिके पिक्चर रे आमे करिची नेक्स्ट आमे देखिबा above absolute zero temperature. When the temperature is raised, some of the covalent bonds in the semiconductor break due to thermal energy. So therefore the conductivity increases due to availability of the free electrons across the conduction band. But then say हमें देखिबा
जे जदि सेठी प्योर जर्मानियम क्रिस्टल आमे रखिले तो ये मुझे देखी टिके देख यहाँ इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक नहीं और ये होल्स गुड़ाक छाड़ी देछि सेटा को होल करेंट बोली आमे कहूचे at room temperature the sum of the covalent bonds in the pure semiconductor break setting of the free electrons under the influence of the electric field. These free electrons constitutes the electric current. At the same time another current, the whole current, also flows in the semiconductor. When a covalent bond is broken due to the thermal energy, the removal of one electron leaves the vacancy and that is the missing of electron in the covalent bond. जोटा को हमें hole बोली हमें कहूचे. This missing electron is known as or called as hole, which acts as a positive charge. And the hole shows a missing electron. Suppose the valence electron एटी मु टिके देखैछि देख माने से इलेक्ट्रॉन टा माने का सपोज एमती मूव करिछि तो जेतले मूव करूछि तो एटी गोटे गोटे होल क्रिएशन ही जाउछि तो अपोजिट डायरेक्शन रे होल रो मूवमेंट होछि इलेक्ट्रॉन एठु एमती जंप मारले सपोज मु इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन रखिली एठी एल एम path of the electron is L M N P then the path of the hole is P N M L बोली रखिबा तमाने मु एठी देखौछि जेहेतु पॉजिटिव चार्ज तमाने एठी रखिली मु माने कर इलेक्ट्रॉन एई डायरेक्शन रे हमरो मूव कला आउ होल्स ता हमरो अपोजिट डायरेक्शन रे हमरो मूव कला सेही हिसाब रे आमे ताको देखै परिबा देन फॉर वन इलेक्ट्रॉन ए देखो एठी टिके भी देखैछि गोटे इलेक्ट्रॉन एठु फ्री हला आउ एठी होल टे क्रिएट हला पुनी एठु इलेक्ट्रॉन ता जंप मारला मु जोटा तुमको टिके ड्रा करके देखैतिली तो सेही हिसाब रे टिके देखै तमने इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन रो मूवमेंट होची पी एन एम एल तो होल रो डायरेक्शन अपोजिट एल एम एन पी बोली हमें टिके देखैछे तो एटा हमर हला द पाथ ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची हमर पी एन एम एल एंड वेयर द होल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पाथ एल एम एन पी तो बर्तमान आमे आउ टिके देखिबा ता मानकर सपोज आमे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हमको केमती लास्ट रे देखा जाता सपोज मैं एठी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रखिली एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रे आमे कोन कहूचे ना एटा होचे मानकर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर तो एठी आमे कहिले हमर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमर more than the number of holes I mean number of electrons which are available across the conduction band is more than the number of holes available across the valence band तो हमें एमती टाइप रो मने करा देखिले तो एठी हमें आकु ना देले कोन ना जेहेतु हमें रखीचे मेजॉरिटी हमर किए ना इलेक्ट्रॉन्स रहले तो एठी हमें कहूचे आकु मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ N type of semiconductor are free electrons majority charge carriers are free electrons which are available across the conduction band. Then the minority charge carrier हमें कहाँ को देखुचे ना minority charge carriers are holes. So minority charge carriers are holes. कहाँ पे ना हमारा n type of semiconductor पाई are holes एटा को हमें कहि परिबा free holes are holes which are available एटा कोठी available होतबो ना हमरो valence band रे हमरो available होतबो एटा हमरो कोठी available होतबो ना हमरो conduction band रे हमरो available होतबो अच्छा वर्तमान एठी जति हमें गोटे इलेक्ट्रॉन जतले रखुचे एठी कोन हितबो सब बेले गोटे पॉजिटिवली चार्ज आयन थिबो तो एठी मध्ये सिमिलरली गोटे पॉजिटिवली चार्ज आयन एठी पॉजिटिवली चार्ज आयन एठी गोटे पॉजिटिवली चार्ज आयन होल जोठी रहला सेठी हमरो नेगेटिवली चार्ज आयन नै कि रहला तो एटा को हमें जदी माने कर कनेक्शन करिवा गोटे बैटरी सहित तो हमें एठी देखिबा कोन ना इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन सब बेले एई डायरेक्शन रे हमरो मूव करिवो
the path of the electron is like this. तो आमे एमती टाइप रो आमे देखिबा स्ट्रक्चर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सिमिलरली जदि आमे पी टाइप रखिबा ताले पी टाइप रे आमे केमती देखिबा ना एठी पी टाइप रे आमे कहूचे कोन ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स and the minority charge carriers are electrons जो गुटा का अवेलेबल होथबो कोठी कंडक्शन बैंड रे. तो एठी हमें देखिबा एठी गोटे नेगेटिवली चार्ज आयन एठी भी नेगेटिवली चार्ज आयन एठी भी नेगेटिवली चार्ज आयन और एठी पॉजिटिवली चार्ज आयन. याकू जेतेबेले हमें बैटरी रे कनेक्शन कर दबा हमें सेही एका प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन एई डायरेक्शन रे देखिबा होल रो डायरेक्शन हमें एई डायरेक्शन रे देखिबा. एठी होल करंट जोटा को हमें कहूचे जे कन्वेंशनल करंट बोली. ताले एठी हमें देखुचे जे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एटा होचे मानेकर सपोज हमर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. तो एठी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमर हेले होल्स जो माने प्रेजेंट अछंती कोठी ना हमर वैलेंस बैंड रे प्रेजेंट अछंती. सिमिलरली द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो माने अवेलेबल होछंती हमर कोठी ना हमर कंडक्शन बैंड रे हमर अवेलेबल होछंती. तो एतिकी जिनस आमे देखिले एन टाइप आउ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. वर्तमान हमर पर्पस होची ए पी टाइप आउ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रो आमे केमिति कंडक्टिविटी बढ़ेबा. तो बढ़ेबा पई हेले पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर whenever suitably joined with n type of semiconductor that combination gives you the PN junction or which is also called as semiconductor diode or which is also called as जेहेतु crystalline structure हमें नहीं सेटा को crystal diode मध्य कुआ जाए. सिंपली हमें ताको जंक्शन डायोड भी कहि परिबा. दीटा जेहेतु मिसी की जंक्शन होची तो हमें ताको जंक्शन डायोड कहि परिबा क्रिस्टल डायोड कहि परिबा सेमीकंडक्टर डायोड कहि परिबा एवं पीएन जंक्शन मध्य हमें कहि परिबा. ता माने वर्तमान नेक्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज पीएन जंक्शन. पीएन junction. PN junction, that means it is also called as junction diode or it is also called as crystal diode or it is also called as सेमीकंडक्टर डायोड. जेहेतु सेमीकंडक्टर सब्सटेंस नहीं कि हमें करूचे सेथि पे आ नाटा हमें देइजे कोन सेमीकंडक्टर डायोड बोली मध्य आकु हमें कहि परिबा. ताने वर्तमान हमें देखिबा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कोन डेफिनेशन तार रहिला ना व्हेन ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हेन ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर is suitably joined with or connected suitably joined with n type of semiconductor that gives us PN junction. PN junction. ताल PN junction हमें केमती देखिबा ना इटा हमर सपोज P type of semiconductor जो थरे हमें रखीचे कोन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स and minority charge carriers are electrons. Eta P type. Then आमे कौन करले इठी N type गोटे रखिले. N type रे आमे जानू जे majority charge carriers are electrons and minority charge carriers are holes. जेतेबेले इलेक्ट्रॉन आमे रखिचे इठी positively charged ion as they are positively charged ion और एठी हमर रहिला negatively charged ion.
एठी नेगेटिवली चार्ज आयन एठी हमरो पॉजिटिवली चार्ज आयन बर्तन पीएन जंक्शन को आमे देखिबा जेतेबेले आमे देखुचे इलेक्ट्रॉन एठी देखुचे गोटे होलटे अछि तो ये सांगे सांगे कौन करिवो एई जगहटा ऑक्युपाई करिवो तो किछि समय परे आमे एठी जंक्शन रे कोन स्ट्रक्चर देखिबा ना ए जंक्शन रे आमे देखिबा किछि समय परे एटा पीएन जंक्शन रहिला पीएन जंक्शन रो एई साइड रे पॉजिटिवली चार्ज आयन गुडाक भर्ती जाइथिबे आउ एठी भर्ती हेतिबो कि नेगेटिवली चार्ज आयन and no free electrons and no free holes are available एठी हमें देखुथिबा तो एई जो पोर्शन रहिला एई पोर्शन टाकू आमे कहिले कोन ना डिप्लीशन लेयर मीन्स the free electron and holes are depleted at this region and this region is known as it will act as a potential barrier and it is denoted by the symbol minus of V0 potential barrier or depletion layer so एठी no free electrons and free holes available across the junction आउ एठी हमें देखिबा कोन ना किछिटा पुणी सेमती पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन आउ होल्स हमर रहिले एठी मध्ये सिमिलरली होल्स आउ किछिटा रहिले आउ एठी हमर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मध्ये रहिला सो नेक्स्ट क्लास रे आमे पढिबा पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक